बिल्कुल जनाब, एक नए मुकाबले के साथ आप तमाम के तमाम शायकीन क्रिकेट को दाऊद बूझ और मेरे साथ आशिक भाई हैं, मोहम्मद आशिक हैं। आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा और ये एक नए मुकाबले के साथ आपका एक नए मैच में आप सबके, हमारे जितने भी नाजरीन हैं, आप सबका वेलकम। और इस टाइम फ्रेंड्स 11 इंडिया वर्सेस आदम भुट्टा टीम का बैन मुकाबला है जिसका आगाज हुआ चाहता है और इसका पनिश कर दिया है 6 रन के लिए। बेहतरीन छक्का आ जाएगा। सनी शाह जो कि कल से नजर नहीं आ रहे थे अपने कलर्स में, आज उन्होंने आते ही हमला बोल दिया यहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया की टीम पर। 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा दिए हैं सनी शाह ने। एहसन शहजाद जो कि सनी शाह के नाम से जाने जाते हैं, यूएई के लोकल स्टार हैं। अब तीसरी बॉल पर देखते हैं क्या करते हैं बॉलर यहाँ पर, और वाइड बॉल का इशारा। बॉलर पर प्रेशर नजर आ रहा है। दाऊद क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली इस तरह के मैचेस में अमूमन होता है कि क्योंकि इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट को टच दिया गया है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। शबीर इस टाइम बॉलिंग कर रहे हैं और इस दफा एक और बेहतरीन शॉट खेला गया है। 6 रन मिल जाएंगे। सुप्रीम 6। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ डिलाइटफुल बाउंड्री आ जाएगी और बिल्कुल यहां पे बंटी पटेल और कप्तान कृष्णा समझाने के लिए आए हैं। डेफिनेटली जब बॉलर को 2 बॉल के ऊपर 2 लगातार बैक टू बैक बाउंड्रीज आ जाए, 3 बॉल पे 3 छक्के लग जाए तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली प्रेशर है वो फील्ड साइड पे बिल्डअप होता है। मुबशर जो कि की मैन माने जाते रहे हैं, प्रीवियस मुकाबले जब एफएमडीके के साथ मैच था तो एक नया आगाज था टीम इंडिया के लिए और पहली बॉल पे ही छक्का लगाया उसामा अली सियालकोट ने। उसके बाद फिर यकेबाज एक ही ओवर में मोहम्मद शबीर ने 3 विकेट गिरा दिए थे। बहुत ही यहाँ पर अच्छा स्टार्ट मिला है आदम किंग भुट्टा को। एहसन शहजाद क्या ही शानदार क्लीन हिट्स उन्होंने लगाई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं और आई थिंक आदम किंग भुट्टा काफ़ी खुश होगी उनकी इस परफॉर्मेंस पर। एक बार फिर बॉलर तैयार, बॉल की और उठाकर खेल दिया है। रिजल्ट रहेगा सेम 6 रन्स। एहसन शहजाद शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर मोहम्मद बॉलर जो है इस बॉलिंग करा रहे हैं, उनको सोचना होगा कि वो शॉर्ट बॉल जब करा रहे हैं तो एहसन शहजाद उसको पनिश कर रहे हैं। यहाँ पर शानदार बैटिंग का मुजाहिरा एहसन शहजाद सनी शाह की तरफ से। दाऊद आपने तो देखा होगा फ्रेंड्स इंडिया को पहले भी खेलते हुए, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखकर आपको क्या लगता है आदम किंग भुट्टा एक बहुत बड़ा टोटल सेट कर पाएगा या वो रोक लेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह का यहाँ पे मोराल बूस्टअप है आदम भुट्टा किंग का, इससे पहले भी मैच हारे लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक अच्छा आगाज फ्राहम किया है और अब ये दिखना ज़रूरी कि जो टारगेट है वो कितना हदफ खड़ा किया जाता है, ये तो अब दिखना ज़रूरी होगा। मैं सबको यहाँ बताता चलूँ, ये है सुपर फिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि हो रही है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। इस ज़बरदस्त इवेंट को आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है सुपर फिक्स ग्रुप ने और सपोर्ट किया है आइकॉनिक। इसमें मोहम्मद शबीर कराएंगे अपने ओवर की आखिरी बॉल। अच्छी यॉर्कर लेंथ बॉल थी, हसन पठान उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं उठा सके। बॉल एज हुई और गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जहां पर 1 रन मिलेगा। हसन ने अपने खाते का आगाज़ किया। मैं आपको बता रहा था कि सुपर फिक्स चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ऑर्गेनाइज की है सुपर फिक्स ग्रुप ने और साथ दे रहे हैं आइकॉनिक हमारे को स्पॉन्सर हैं इस फैंटास्टिक इवेंट्स के लिए सीजन्स रेस्टोरेंट और उसके साथ जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अलदबवी हैंनकुक, जो इस इवेंट के लिए हमारे साथ जुड़े।
तनसीर को लाया गया है। तनसीर शबीर अहमद के भाई हैं, जिनको प्रीवियस ओवर में 27 रन से वो लगे थे, लेकिन डबल 7 नंबर की शर्ट में मलबूस हैं तनसीर। लेकिन इस दफ़ा लॉन्ग लेग की जानिब खेला, शॉट, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। टेबल क्रिकेट है, शॉर्ट क्रिकेट है, इसमें शायकीन क्रिकेट अमूमन छक्के चौके देखने के लिए आते हैं। और आज एक यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर हुई कि एक बड़ा अच्छा आगाज़ यहाँ पे एहसन की जानिब से, एहसन शहजाद की जानिब से दिया गया था। 5 बॉल पे 25 रन अभी तक बना रखे हैं। अच्छी बॉल यहाँ पर यॉर्कर लेंथ स्ट्राइक की तनसीर ने, एहसन शहजाद से बॉल मिस हिट हुई, बॉल गई है शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के पास और 1 रन मिलेगा, स्ट्राइक जाएगा वापस हसन पठान की तरफ। बिल्कुल हसन पठान यहाँ पे, पठान को यहाँ पे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। ये वैसे बड़ा मुनफरिद इवेंट है आशिक। ये इस दफा लंबा खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा लॉन्ग लेग की जाने फील्डर मौजूद हैं, सो 1 रन आ जाएगा बासानी। लंबा खेलने से मुराद ये कि बड़े शॉट लगाना चाह रहे थे, बहरहाल उस अंदाज से हिट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ का आशिक अगर बात करता चलूँ कि पठान भी हैं, पश्तून भी हैं, तमाम तर यहाँ पे जितने भी शायकीन क्रिकेट है वो मैचेस को देख रहे हैं, और हर बरादरी, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको मिला दिया है चेयरमैन नवीद अहमद ने। और इस दफ़ा कदमों का इस्तेमाल किया है, 4 रन आ जाएंगे। बेहतरीन चौका यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की जानिब। एहसन शहजाद डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेले, 4 रन उनके खाते में बढ़ते हुए। आप देखें एहसन शहजाद वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पर हमला कर दिया है फ्रेंड्स इंडिया की टीम पर, और 7 बॉल पर 30 रन उन्होंने ऑलरेडी बना लिए हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे इस ज़बरदस्त इवेंट की जो सजाया है सुपर फिक्स ग्रुप ने। एक बार फिर बॉलर तैयार तनसीर, और अच्छी बॉल थी इस बार, बैट्समैन बीट हुए, बॉल कीपर कृष्णा के पास गई, उन्होंने बॉल को अच्छे तरीके से रोका। लेग बाई का इशारा हमारे अंपायर की तरफ से, काशिफ बिल्ला है यहाँ पर मेन अंपायर। जी दाऊद, जो आप बात कर रहे थे, ये जो शानदार मेला सजाया है, आज छुट्टी का दिन है, संडे है, काफ़ी सारा क्राउड आया है यहाँ पर ये शानदार मैचेस देखने के लिए। तनसीर अपने ओवर की आखिरी बॉल करते हुए इस बार खेल दिया है हसन पठान ने, इसको फील्डर सिर्फ देखते रहेंगे और बॉल जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा स्टार्ट यहाँ पर आदम किंग भुट्टा, क्या कहना चाहेंगे इस शानदार शॉट जो हसन पठान ने खेली। दोनों बैट्समैन ही अब हमला बोल रहे हैं फ्रेंड्स इंडिया की टीम पर। ये जिस तरह का तनसीर का एक्शन है, सेम लाइक मुझे एक प्रीवियस, इससे पहले आज से 7-8 मंथ पहले एक लीग हुई थी KTPL, जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत उनका एक्शन है। सैयद आरिफ शाह, और बड़ी कमाल की उन्होंने बॉलिंग की, और सेम लाइक उसी तरह ही अपना जो रन्स है वो सेव करते हुए यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मुकाबला जारी हो सारी है। आदम किंग भुट्टा, इसके बैट्समैन ये इरादा करके आए हैं कि एक बड़ा स्कोर देना है। पिछले मैच में जैसे FMT के UAE ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, मुखालिफ टीम को प्रेशर में डाला, यहाँ पर आदम किंग भुट्टा भी यही प्लान लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन फ्रेंड्स इंडिया के कृष्णा अपने बॉलर्स के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ मशवरे करते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एहसन शहजाद जिन्होंने 8 बॉलों का सामना किया, 30 रन बनाए हैं, और तनसीर के 1 ओवर में 13 रन आए हैं। 9 पर खेल रहे हैं हसन पठान। अगला ओवर कराने के लिए बैट्समैन दोनों तैयार हैं। बंटी पटेल हैं अगले बॉलर, उन्होंने डेफिनेटली देख लिया होगा कि पहले 2 ओवर में 41 रन बना दिए हैं यहाँ पर एहसन शहजाद और हसन पठान ने। वो एक अच्छे बॉलर हैं बंटी पटेल, देखना होगा कि वो अब कैसी बॉलिंग कराएंगे। एहसन शहजाद यहाँ पर अच्छी बैटिंग करते हुए। बंटी पटेल, इनकी बैटिंग भी बहुत शानदार है, ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं फ्रेंड्स इंडिया की टीम के। सामने हैं एहसन शहजाद जो कि आदम किंग भुट्टा के एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। एहसन शहजाद तैयार, बंटी पटेल तैयार, आए, बॉल डाली, स्लोअर 1 ट्राई की थी, इसको अच्छे तरीके से खेला, मिड विकेट के फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, 1 रन मिलेगा
हसन शहजाद को स्ट्राइक रोटेट हुई है, इससे सामना करेंगे हसन पठान। स्कोर बढ़ते हुए 42। इस हिसाब से अगर चलेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 116 आ रहा है। बहुत ही अच्छा स्टार्ट है आदम किंग भुट्टा का। यहां पर बंटी पटेल अपने ओवर की दूसरी बॉल करवाएंगे। इस बार उठाकर खेला है हसन पठान ने, फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेल जज कैच किया है। डीप मिड विकेट के फील्डर ने कॉर्नर पर आकर एक अच्छा कैच पकड़ा है। इस तरह पहली कामयाबी मिली है फ्रेंड्स इंडिया की टीम को और पहला नुकसान हुआ आदम किंग भुट्टा का। 42 रन्स पर पहली विकेट गिरी है। बहुत ही यहां पर देखना होगा कि शानदार कामयाबी मिली है बंटी पटेल को। दोनों सेट बैट्समैन थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे और आदम किंग भुट्टा की पहली विकेट गिरी है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से ये तमाम तर शायकीन क्रिकेट के लिए एक टेप बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप सजाया गया है और इस टाइम टीम भारत जिसका नाम फ्रेंड्स 11 इंडिया है, डेफिनेटली भारत इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। और दूसरी जानिब आदम भुट्टा किंग जो कि ओमान टीम है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है वो इस टाइम जारी उसारी है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में आशिक हुसैन मौजूद हैं, मोहम्मद आशिक। आशिक क्या कहना चाहेंगे टेबल क्रिकेट के इस मिनी वर्ल्ड कप के हवाले से, जिस अंदाज से इस इवेंट को हाइप मिली और पूरी दुनिया के अंदर ये टेबल क्रिकेट का वर्ल्ड कप है हमारे जियो सुपर की ऑफिशियल स्क्रीन पे लाइव दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मेला यहाँ पर सजाया गया है। सुपर फिक्स ग्रुप और उनको सपोर्ट किया है आइकॉनिक गिफ्ट्स ने। शानदार मेला सजाया है और यहाँ पे जैसे कि आप इस मैच की तरफ अगर हम वापस आते हैं तो तौकीर अजमत आ गए हैं बैटिंग करने के लिए हसन की विकेट गिरने के बाद। और बंटी पटेल कामयाब बॉलर, अच्छी बॉल डाली उन्होंने, शॉट ऑफ द लैंड डाली, बैट्समैन बॉल को समझ नहीं पाए और बॉल गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। वापस आएंगे इसी बात पर जो आप कर रहे थे दाऊद, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टेप बॉल क्रिकेट के और भी टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन सुपर फिक्स ने एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सारे ही टेप बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स के लिए, जहाँ पर शानदार अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्राउड आप देख सकते हैं भरपूर तादाद में यहाँ पर आए हैं लोग। संडे का दिन है, अच्छा सनी डे है और बॉलर एक बार फिर तैयार। वाइट बॉल अंपायर का डिसीजन आ जाएगा। आई थिंक दिस इवेंट इज अ ट्रेंड सेट इवेंट, क्योंकि इस इवेंट ने ट्रेंड सेट कर दिया है टेप बॉल क्रिकेट के हल्कों में धूम मचा दी है ज़रूर। और अब इस जैसे इवेंट कई पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। सो हमारे इस इवेंट की ये खासियत है कि शायकीन क्रिकेट की आज एक बड़ी तादाद ने रुख किया है शारजा क्रिकेट स्टेडियम का और डेफिनेटली जो मुकाबला है वो उसका इंतज़ार है। इस टाइम पूरी दुनिया में इंतज़ार किया जा रहा है। फ्रेंड्स 11 इंडिया वर्सेस पाक MWI टीम कब आपस में टक्कर में होगी। सो शायकीन क्रिकेट एक मैच के बाद आपको ये इंतज़ार की घड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और दुनिया टेबल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आपको जियो सुपर की स्क्रीन और दीगर काफ़ी डिफरेंट चैनल्स के जरिए दिखाया जाएगा। ओके, एक बार फिर बंटी पटेल आए और इस बार वाइड बॉल का इशारा। बंटी पटेल ने कुछ अच्छी बॉल्स कराई, उसके बाद शायद उनकी लाइन लेंथ बिगड़ गई है, यहाँ रनअप में कुछ मसला हो गया है। वाइड बॉल उन्होंने कराई है। काफ़ी सारी उम्मीदें यहाँ पर बंटी पटेल जो कि एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, फ्रेंड्स इंडिया की काफ़ी सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर बंटी पटेल के हवाले से बताता चलूँ आशिक, बंटी पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं कि पूरी इंडिया के जो फ्रेंड्स 11 इंडिया है वो एक साइड पे और जो पूरी टीम का एक ही खिलाड़ी ये थ्रू आउट द इवेंट परफॉर्म करता आया है। जिस अंदाज से इस लड़के ने उसामा की टीम के खिलाफ परफॉर्म किया, FMDK की टीम के खिलाफ, तो अनक्रेडिबल परफॉर्मेंस रही है इनकी। और इस दफा लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद होंगे, बेहतरीन विकेट आ जाएगा यहां पे। एक और नुकसान हुआ यहाँ पर आदम किंग भुट्टा को, उनकी दूसरी विकेट गिरी। अच्छी बॉल थी एहसन शहजाद जो कि अच्छी हिटिंग कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये बॉल भी जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन क्या ही शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। दूसरा नुकसान हुआ आदम किंग भुट्टा को और देखना ये होगा बंटी पटेल जो कि उनके कामयाब बॉलर हैं,
वो और भी कितनी कामयाबियां यहाँ पर समेट सकेंगे अपनी टीम के लिए। फ्रेंड्स इंडिया जिन्होंने स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं लिया था, अब उनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बहुत ही शानदार उन्होंने कम बैक किया है इस मैच में। द डेंजर मैन एहसन शहजाद, सनीशा आउट होकर वापस। आशिक, शारजा क्रिकेट स्टेडियम का क्राउड है वो बड़ा ही मशहूर है और आज बड़ी कम्युनिटी आई है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्पेशली जो इंग्लिश पीपल्स हैं वो उन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है हमारे टेप बॉल के इस वर्ल्ड कप को। आप देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट को ओपनली इजाज़त दी गई है जहाँ जहाँ पे जिस मर्जी स्टैंड्स में बैठे और यहाँ पे शायकीन क्रिकेट जरूर फैमिली के साथ आके एंजॉय करते हुए इस टेप बॉल क्रिकेट के इस बैंड सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी को। बंटी पटेल लेफ्ट द स्टेशन। ओह माय गुडनेस, उछाल लेके आए थे, बिल्कुल समझ नहीं सके हैं, हल्का सा राइज हुआ बॉल और ये डॉट बॉल होगा। बेहतरीन डिलीवरी बंटी पटेल की जानिब से। उस्मान लाहौरी हैं, उस्मान शहजाद हैं सामने। बंटी पटेल ने पूरी एनर्जी डाली इस बॉल में। मेरे ख्याल में ये तो 1 for the over होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन वो फाइनल है, एम्पायर ने दिया नहीं और बंटी पटेल के ओवर की अब आखिरी बॉल करवाएंगे। अभी तक के सबसे कामयाब बॉलर फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से जिन्होंने शानदार बॉलिंग करवाई है, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अब सामने हैं उस्मान शहजाद लाहौरी। बंटी पटेल स्लोअर वन ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन बॉल गई ऑफ साइड, ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर काशिफ बिल्ला की तरफ से। ये है सुपर फिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। जो लोग हमें घर लाइव देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो दुबई में हैं, शारजा में हैं या अमीरात में हैं, यहाँ आइए शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हमें ज्वाइन कीजिए। शानदार वेदर है, उतनी ही अच्छी क्रिकेट हो रही है। यहाँ आइए, ग्राउंड की रौनक बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए। टेप बॉल क्रिकेट को यहाँ पर फुल तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। बंटी पटेल का ओवर काफ़ी लंबा हो गया है, आखिरी बॉल के लिए बंटी पटेल तैयार। लेकिन अभी तक ओवर लंबा तो हुआ, लेकिन अभी तक बंटी पटेल को इतने रन्स नहीं आ पाए हैं जिस तरह का उनके ओवर से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा रोका जरूर है, ये नो बॉल करार दिया गया है। अंपायर काशिफ का यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा। आशिक, जिस अंदाज से इस टेप बॉल क्रिकेट के फर्स्ट इवेंट में क्रिस गेल तशरीफ लेके आए, जो हमारी सेरेमनी थी, जो ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर क्रिस गेल जिस अंदाज से उन्होंने शिरकत की, और आज भी एक बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। दुनिया टेप बॉल क्रिकेट का तो नहीं होगा, लेकिन वो दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रहा है। और इसके साथ साथ जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे भाईजान और बड़े भाईजान हमारी इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो भी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आईफोन की यहाँ पे आज बरसात होगी, जिस तरह चक्कू की बरसात चल रही है। क्या कहते हैं आशिक? यहाँ पर हम मैच की थोड़ी सी अपडेट दें। 3 ओवर के इख्तिताम पर 48 रन हो गए हैं आदम किंग भुट्टा के। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इस इवेंट में शुरू से ही सरप्राइजेस मिल रहे हैं। काफ़ी सारे सरप्राइजेस यहाँ पर दिए गए, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी में क्रिस गेल आए और लोगों ने देखा कि टेप बॉल क्रिकेट शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। ये भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया जिन्होंने अच्छा कमबैक किया है अपने तीसरे ओवर में, उस्मान शहजाद लाहौरी और तौकीर अजमत हैं बैटिंग पर आदम किंग भुट्टा की तरफ से। जैसे ही चौथा ओवर शुरू होगा हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स इंडिया के अगले बॉलर जिग्नेश आ गए हैं। सामने हैं उस्मान शहजाद लाहौरी और हवा में खेल दिया है बॉल को। देखना होगा कोई फील्डर वहां तक पहुंचेगा, नहीं, बॉल गिरा नो मैंस लैंड पे और एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर बॉल गिरी। उस्मान शहजाद को जो बॉल को टाइम नहीं कर पाए, यहाँ पर ज़रूरत है आदम किंग भुट्टा को कुछ बड़ी हिट्स लगाने के लिए। लेकिन आई थिंक आखिरी जो ओवर बंटी पटेल ने करवाया है उस पर काफ़ी प्रेशर डाला है उन्होंने आदम किंग भुट्टा के ऊपर भी।
बिल्कुल डेफिनेटली जगनेश हैं और उनको एक रन का संदेश ज़रूर दिया है जगनेश को। एक बार फिर से जगनेश कुमार, इस दफ़ा एक रन आ जाएगा। बड़ी अच्छी लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं जगनेश और यूएई में एक लेदर बॉल क्रिकेट में बड़ा नाम है जगनेश का। बेसिकली ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एम्बिशन ये था कि टेप बॉल क्रिकेट को एक इंटरनेशनल मिले और इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि टेप बॉल क्रिकेट हर कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में खेली जाएगी। फिफ्टी वन रन अभी तक बना रखे हैं। अगर बात करता चलूँ टीम आदम बुड्ढा किंग की, पहले ही ओवर में जिस अंदाज से दहशत अंगेज बैटिंग की गई, 27 रन पहले ओवर में आए, लेकिन इस दफा मिस कोऑर्डिनेशन है, फ्यूल कम पड़ गया है और बंटी पटेल ने हाथों पे लगा लिया था तेल और बेहतरीन विकेट आ जाएगी यहां पे। एक बेहतरीन डिलीवरी, स्लो बाउंस था और उसको सही अंदाज से खेल नहीं पाए हैं तुकीर और बेहतरीन विकेट यहां पे। ये टीम भारत का, टीम फ्रेंड्स 11 इंडिया के बंटी पटेल, और यहां पे इनिंग का हाथमा होगा तुकीर का। इस इवेंट के हवाले से ये चीज जरूर बताता चलो कि साकी स्पोर्ट्स हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट पार्टनर है और साकी स्पोर्ट्स सियालकोट जो कि एक टेप बॉल क्रिकेट के ब्रांडेड बैट्स एंड बॉल्स बनाते हैं और वो हमारे इस इवेंट में उनके कोलैबोरेशन से स्पोर्ट्स स्पॉन्सर बने हैं। थैंक यू सो मच साकी स्पोर्ट्स। जिग्नेश जिन्होंने कामयाबी समेटी, यहाँ पर आदम किंग भुट्टा की विकेट उन्होंने गिराई है और अब आने वाले नए बैट्समैन हैं मोहम्मद इमरान जो कि मानी तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं, यूएई के लोकल स्टार हैं। जिग्नेश अच्छी बॉल कराई, मोहम्मद इमरान संभल कर खेले, देखना होगा क्या दूसरे रन के लिए भी वापस आते नहीं, लेकिन फील्डर की अच्छी कोशिश, यहाँ पर दूसरा रन नहीं बना। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने आके बॉल को फील्ड किया और यहाँ पर जिग्नेश अभी तक 5 बॉल्स करा चुके हैं, सिर्फ 4 रन दिए हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से। यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हमें घर बैठे सुन रहे हैं उनसे दरखास्त है कि ग्राउंड पर हमें ज्वाइन करें। जिग्नेश अपने ओवर की आखिरी बॉल कराएंगे। इस बार उस्मान शहजाद ने कदमों का इस्तेमाल किया और लगा दिया है एक बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से उस्मान शहजाद लाहौरी। इस तरह 4 ओवर के अख्ताम पर 58 रन हो गए हैं आदम किंग भुट्टा के। पांचवें ओवर का आगाज हुआ है। बंटी पटेल आ गए हैं, फ्रेंड्स इंडिया के कामयाब बॉलर। यहां पर कीपर से बॉल को रोका नहीं गया और दूसरे रन के लिए वापस आ गए हैं। 12 नंबर की शर्ट पहने हुए यहां पर मोहम्मद इमरान जाने जाते हैं मानी तेंदुलकर के नाम से। स्कोर बढ़ते हुए 60, प्रोजेक्टेड स्कोर 86 है। आज सुबह से ये देखा गया है कि जितने भी मैच हुए हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हुई है, क्राउड को छक्के और चौके देखने को मिले हैं। मानी तेंदुलकर लेंगे स्ट्राइक और बॉलर हैं बंटी पटेल। बंटी पटेल ने 2 कामयाबियां समेटी हैं यहाँ फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से और सिर्फ 6 रन दिए हैं। बंटी पटेल अपने ओवर की दूसरी बॉल करवाएंगे। सामने हैं मानी तेंदुलकर। इस दफा एक रन आते का आसानी, डीप मिड विकेट पोजीशन पे फील्डर मौजूद होंगे।
ओके, यहां पर बंटी पटेल एक बार फिर सामने हैं उस्मान शहजाद, और उस्मान शहजाद ने लगा दिया है बहुत ही शानदार यहां पर छक्का। उस्मान शहजाद लाहौरी के यहां पर अगर देखा जाए तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, हर बॉल को बड़ी हिट लगाने में कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। उनके बैट से निकलता हुआ दूसरा 6। यहाँ पे लाहौरी नान और चने बड़े मशहूर हैं, और ये लाहौरी नान चनू वाली शॉट है, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह नाश्ते में आई थिंक यही खाए थे जनाब। क्या कहते हैं आशिक, पाकिस्तान के बड़े ये नान चने और लाहौरी नाश्ता बड़ा मशहूर है। एक बार फिर बंटी पटेल बॉल कराई, शॉर्ट बॉल कराई, अंपायर का यहां पर इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वापस आएंगे, आप जो बात कर रहे थे, पाकिस्तानी लोग जहां पर भी हों हमेशा अपने वतन की मट्टी को मिस करते हैं। यूएई में हमने ये जो मेला सजाया है, सुपर फिक्स ने ये जो शानदार मेला सजाया है, वो अपने वतन के लोगों के लिए ही सजाया है, क्योंकि पाकिस्तान में खेली जाती है टेप बॉल क्रिकेट और उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको शारजा क्रिकेट स्टेडियम तक लेकर आए हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही तारीख साज स्टेडियम है, जिसमें पहला मैच 1984 में खेला गया था। और हम यहाँ पर बताते चलें अपने तमाम व्यूवर्स को, फ्रेंड्स इंडिया की टीम जिसमें ज़्यादातर प्लेयर्स इंडिया से खेल रहे हैं। वापस आएंगे मैच की तरफ, बंटी पटेल, ओके, यॉर्कर लेंथ बॉल, अच्छी बॉल, उस्मान शहजाद बीट हुए। बंटी पटेल के बारे में आपने जैसे हमें पहले बताया कि ये एक अच्छे बॉलर हैं, आज उन्होंने वो साबित कर दिया है। नो डाउट अबाउट, तजर्बा है और ये बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को बंटी पटेल। एक तरफ पूरी टीम इंडिया का मुराल जहाँ पे कल डाउन नज़र आ रहा था, वहाँ पे बंटी पटेल का बल्ला है, वो ये इस बात की उम्मीद दिला रहा था कि जैसे भी है हमने विकेट के ऊपर सरवाइव करना है, और वो करती दिखाई दी गई यहाँ पे कल का जो मुकाबला था। और आज भी बंटी यहाँ पे कलरफुल इनिंग खेलने के लिए पुरअमन, और जहाँ पे एक अलग से ही अपनी जो चीज़ें बयान करते हुए बंटी, और इस दफा हरा बॉल किया है, 6 रन मिल जाएंगे यहाँ पे, बेहतरीन छक्का स्क्वायर लेग की जानिब। बहुत ही शानदार शॉट यहां पर मोहम्मद इमरान, जो कि मानी तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी शॉट खेली 6 रन के लिए। जी, स्ट्राइक है मोहम्मद इमरान के पास, जो कि खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दूसरी जो शॉट लगाई 6 रन के लिए। एक बार फिर यॉर्कर लेंथ बॉल, बॉल गई है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, 1 ही रन मिलेगा, स्ट्राइक चेंज होगी, स्ट्राइक जाएगी उस्मान शहजाद लाहौरी के पास। 76 रन का जो पहाड़ है वो अभी तक खड़ा किया है, लेकिन 5 ओवर का खेल इस टाइम जारी है। और आज देखना ज़रूरी है कि टीम जो इंडिया है वो फ्रेंड्स 11 इंडिया कान तक सरवाइव करती नज़र आएगी इस तरह की कंडीशन के अंदर, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट बहुत कम खेली जाती है, टीम फ्रेंड्स 11 इंडिया के खिलाड़ियों का कहना था। और ये बड़ी उम्दा डिलीवरी बंटी नाहुश यहाँ पे, लेकिन बहुत कमाल ओवर यहाँ पे बंटी पटेल का। एंड ऑफ द ओवर 2 छक्के जरूर इस ओवर में आए आशिक, लेकिन वो टेप बॉल क्रिकेट में एक एवरेज होती है 2 छक्के अगर लगते हैं गेंदबाज को, बट 5 ओवर के हाथ पे 77 फॉर 3 विकेट्स। यहाँ पर बंटी पटेल अभी तक के सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए हैं फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से। प्रोजेक्टेड स्कोर 92 रन्स। मेरे ख्याल में जिस तरह की बॉलिंग है आदम किंग भुट्टा की, अगर वो 92 या एनीथिंग अबव 90 बनाते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी होगी इस रन को चेस करने के लिए। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 77 रन्स हुए हैं। ये है सुपर फिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। इसको ऑर्गेनाइज किया है सुपर फिक्स ग्रुप ने और उनको सपोर्ट किया है आइकॉनिक गिफ्ट्स ने। हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स में हैं अल दबवी, हैंकॉक टायर्स और हमारे को स्पॉन्सर्स हैं। आशिक जरा मुकाबले की तरफ आते हैं। बेहतरीन मुकाबला, 77 रन जहां पे नजर आ रहे थे बोर्ड पे, लेकिन ये इस दफा 1 रन आ जाएगा बासानी। आशिक क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? जिस अंदाज से आज उन्होंने बैटिंग करी और टीम आदम भुट्टा किंग ने जिस अंदाज से लेके चले मैच को, तो बड़ा कमाल का मुकाबला रहा। बहुत ही अच्छा मुकाबला अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है। दोनों टीम्स ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाली है। जहां पर पहले 2 ओवर
जो आदम किंग भुट्टा के नाम पर थे, अभी उसके बाद फ्रेंड्स इंडिया की टीम के नाम है। आखिरी ओवर का खेल जारी है और यहां पर मोहम्मद इमरान ने खेली है शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, नुकसान होगा यहां पर आदम किंग भुट्टा को और कामयाबी मिली फ्रेंड्स इंडिया की टीम को। यहां पर नुकसान हुआ है, इससे डेफिनेटली जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। आदम किंग भुट्टा का नया बैट्समैन 10 नंबर गुफरानुल्लाह खान पिच की तरफ बढ़ते हुए। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। सब लोग यहां पर आए हैं इस शानदार टेप बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट को देखने के लिए, जो कि लाइव दिखाया जा रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और जियो सुपर पर। इस ओवर की सिर्फ 4 बॉल्स बाकी हैं, देखना होगा इन 4 बॉल्स का कैसे फायदा उठाती है आदम किंग भुट्टा। बिल्कुल आदम किंग भुट्टा टीम ओमान इसका मध्य मुकाबल है टीम फ्रंट 11 इंडिया के साथ, और ये इस दफ़ा 1 रन आ जाएगा। बेहतरीन शॉट फील्डर मौजूद होंगे काव कार्नर में। बंटी पटेल आज हमेशा हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस खिलाड़ी का दिन होता है वो हमेशा अलग से ही नज़र आता है। और आज यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि वाकई में क्या आज बंटी पटेल का दिन कारआमद होगा, आदम भुट्टा टीम को मारदाड़ करेंगे बैटिंग में या नहीं? इस बॉल के बाद हम बताएंगे आपको। यहां पर उस्मान लाहौरी हैं, बंटी पटेल तो बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर उस्मान शहजाद लाहौरी का बल्ला चल रहा है। एक और छक्का यहां पर लगा दिया है उन्होंने। बंटी पटेल डेफिनेटली एक की प्लेयर होंगे फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से। आप जानते हैं कि वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और स्कोर एक बड़ा खड़ा करना होगा। यहां पर आखिरी 2 लीग डिलीवरीज बाकी। वाइड बॉल छक्के लगने के बाद इतना प्रेशर तो आता ही है बॉलर पर। बिल्कुल आज उस्मान शहजाद का बल्ला ऐसे चल रहा है जैसे ना दिल्ली ना लाहौर, क्योंकि उस्मान लाहौरी इनका नाम है, ना दिल्ली ना लाहौर। शायकीन क्रिकेट यहाँ पे उनके छक्कू पे जरूर कर रहे हैं शोर। सो बेहतरीन मुकाबला और इस दफा बिल्कुल समझ नहीं सके हैं, पहले बल्ला घुमाया था, डॉट बॉल आ जाएगा। अब सिर्फ एक बॉल बची है, 87 रन हुए हैं आदम किंग भुट्टा के, 4 विकेट्स पे उनका नुकसान हुआ है। और यहां पर उस्मान लाहौरी सामना करेंगे आखिरी बॉल का। आशिक ये चीज जरूर बता दूं कि इस मैच के बाद, क्योंकि ये मैच है सीरी लाइंस वर्सेस एफएमटी और उसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। एक मैच के बाद 6 रन आ जाएंगे यहाँ पे। बेहतरीन छक्का, ना दिल्ली ना लाहौर, सीधा बॉल जनाब शायकीन क्रिकेट का यहाँ तक आ रहा है शोर। सो 6 रन आ जाएंगे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हुई चली हैं। और ठीक एक मैच के बाद, क्योंकि इसके बाद एफएमटी और दूसरी जानिब टीम ऑन एक्शन होगी सीरी लाइंस, और ठीक उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाक MWI वर्सेस फ्रेंड्स 11 इंडिया के में टक्कर होगी। सो मिलते हैं अगले मैच में।
टेबल की यूएफएमटी के टॉप ऑफ द चार्ट है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक दी है। और दूसरे नंबर पे है पाक एमडब्ल्यूआई, और तीसरे नंबर पर है फ्रेंड्स इंडिया, चौथे नंबर पे है आजम किंग भुट्टा। लेकिन इस पॉइंट टेबल को तब्दील होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। हम लोग वापस आएंगे जब अपने मैच की तरफ, तो हम आपको बताएंगे कि ये जो मैच अभी चल रहा है फ्रेंड्स इंडिया और आदम किंग भुट्टा के, इसका रिजल्ट का पॉइंट टेबल पर काफी सारा असर होगा। यहाँ पर कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है यूएई के माने हुए और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आसिम शेख ने। आसिम, आप सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर सुपर बिग चैंपियंस ट्रॉफी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। आप पहले तो ये बताएं कि आपका हमारे साथ ये सफर कैसा गुजरा है अभी तक, और आज जो ये क्राउड इतना आया है इस पर आप क्या कहेंगे? सफर जिस तरीके से गुजरा था आशिक भाई, मेरे हिसाब से जिस तरीके से क्राउड ने आके इसको आसान किया है ना, मैं कहूँगा 4 चांद लगा दिए यहाँ पर क्राउड ने। तमाशाइयों ने 4 चांद लगा दिए यहाँ पर सुपर फिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी को। क्राउड आया है, बड़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज आए हैं और बच्चे आए हैं, क्योंकि छोटे फैंस जो होते हैं वो क्रिकेट को दिल से चाहते हैं। और यहाँ पर टेप बॉल क्रिकेट, जिसको हम अपनी जुबान में एक आसान क्रिकेट कहते हैं, उसको देखकर यहाँ बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन था, लोग उठने में थोड़ा देर जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी तादाद में यहाँ पर पर, और काफ़ी कलरफुल एटमॉस्फेयर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और उम्मीद यही होगी कि जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी तमाशाइयों की तादाद बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक वक्त में यहाँ पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि कुछ लिमिटेड एरियाज है जो ओपन किए गए हैं तमाशाइयों के लिए। और हम गुजारिश करेंगे आपसे कि जितने जल्द से जल्द आ जाएं और अपनी जगह पकड़ लें यहाँ पर। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड में आइए। शारजा का क्राउड, दुबई का क्राउड, यूएई का क्राउड ग्राउंड में आएंगे। यहाँ पर आकर क्रिकेट जो देखने को मिलेगी, मेरे ख्याल में ये एक फुल पैसा वसूल टूर्नामेंट है। और इसकी एक खास वजह ग्राउंड आने की, क्योंकि इसके बाद एक मैच होगा जरूर, और उसके बाद जो मैच है वो है फ्रेंड्स इंडिया और पाक एमडब्ल्यूआई, स्टार्स फ्रॉम इंडिया टेकिंग ऑन स्टार्स फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स गोना बी अ बिग क्लैश, बिग एनकाउंटर, a blockbuster of an encounter which I believe will hit the record number of viewership. अभी राइट नाउ फ्रेंड्स इंडिया का सामना है आदम किंग भुट्टा से, जिन्होंने एक बड़ा स्कोर मेरे मुताबिक सेट कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया की टीम को स्कोर करना है 94 रन्स सिर्फ 6 ओवर्स में। और यहाँ पर देखा गया कि उन्होंने अपनी ओपनिंग में चेंजेस करके बंटी पटेल को ऑफ द ऑर्डर भेजा है, ताकि वो जाके कुछ बड़ी हिट्स खेलें, ताकि रन पीछे आए। एब्सोल्युटली यार शाहिर, इसी के साथ यहाँ पर मुशाहिर जो आए हैं सलामी बल्लेबाजी करने बंटी पटेल के साथ, और इसी के साथ अच्छी तेज गेंद यहाँ राशिद सकलेन के जानिब, काफी अच्छी, और काफी अनकंफर्टेबल थे उस शॉट को खेलने के लिए मुशाहिर। और इसी के साथ फ्रेंड्स इंडिया एक बिना किसी नुकसान के। हमने देखा है राशिद सकलैन ने कल भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई थी। एक ऐसी वेरिएशन डालते हैं, हमेशा बैट्समैन को परेशान करके रखते हैं। अब स्ट्राइक पर हैं बंटी पटेल, जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में फ्रेंड्स इंडिया की उम्मीदों को काफी ऊपर तक लेके गए हैं। उनके सबसे, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सबसे अच्छे उनके बैट्समैन हैं। देखना होगा, ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा यहाँ पर। राशिद सकलैन और बंटी पटेल ने ट्राई की थी, लेकिन बॉल गई सीधी मोहम्मद इमरान विकेटकीपर के हाथों में। और अंपायर का इशारा, ये एक नो बॉल है। इस स्टेज पर अगर आप इस तरह की बॉलिंग कराएंगे तो अपनी टीम का नुकसान करेंगे। Absolutely there, can't agree more to that Ashik. No ball in this situation against Bunty Patel. Anyways, it's going to be a free hit situation, but here they cannot get wicket of Bunty Patel on this particular ball. He has to bowl with proper control here, Rashid Sakleen. I think he's trying to put some extra effort, and in that result he's doing a no ball.
Now, even in hardball cricket, that has been his consistent problem there, Ashik. So it's a problem with his run-up. Now, when you have issues with your run-up, you probably take a mark again. Once again, Rashid Suklan, and there's a helicopter shot. What a shot by Bunty Patel. I want to know your comments on this shot. Well, absolutely brilliant. And if you can expect helicopters to be launched here in Sharjah Cricket Stadium, it's going to be from this man. Look at that. One is Osama from Sialkot, and here is Bunty Patel from India. He has launched his helicopter. Fantastic shot, and I must say the crowd, the big number of crowd which is here, they would have loved this shot. Well, hits them with a lot of power there, Bunty Patel. And no, in my opinion, he has been the only batter in the Indian team who has been impressive with the bat, with the ball as well. The other day, he almost pulled out the game. And Mushahir, we'll have to see more of him. But Bunty Patel has been really promising. His wicket will be very, very crucial. Once again, Bunty Patel, this time was very careful, and there will be just one run, and the strike will go to Mushahir. Well, Bunty Patel's wicket is going to be very, very crucial in the context of the result of this game. Friends, India 7 for no loss after the first 3 balls here. Getting that boundary of that free hit delivery. What a shot that was. Trust me, it was one of the finest shots. We haven't seen it. Helicopters we have seen getting launched on the onside, but to launch that helicopter on the offside, what a bullet shot. This displays the confidence of this fantastic batsman, Rashid Suklan, once again. This time, if you have seen, Mushahir is also trying a helicopter, but result is not the same, but this is looking like he's also achieving some confidence here. Now, I mean, if you have noticed this, you'll find a lot of Indian players playing out this helicopter shots a lot. Reason being, they play with that hard tennis, which is slightly heavier, and when the ball pitches on the turf, it tends to be a little slower compared to the tape ball. So they have enough time to generate power from the bottom hand and roll their arms over. This time played straight, long on fielder Nabil Zafar, the captain of Adam King Bhutta, has done the fielding here. Just one run to Bunty Patel, strike goes back to Mushahir. Now, this shows how naive these players from India are. If you notice, none of these batters, they are checking the ball. That is practice, regular practice from the batters. The moment they come back on the non-strikers, and the first thing they do is check the ball if it has enough tape coverage on it, whether to carry all the way. They are missing out on that ploy. It's just basics of tape ball cricket. We come back to this point. This time played very nicely, but there is a fielder at deep mid wicket, just one run to Mushahir. The point which you raised just right now, because I know the Indian players, they're playing the hard tennis, there's no tape on it, so they are not tend to check every ball. But the Pakistani players which are in UAE FMGK and Pak MWI, or even the local stars which are there in Adam King Bhutta, and at the end of every ball, they will inspect the ball, check the taping is fine, otherwise they'll throw it back to their team to give them a fresh ball. Absolutely. I mean, this comes in with practice, and if you're playing regularly with this ball, I would see these players, the same Indian players, evolve in a different way completely. Give them a year or two, let them practice, and this is going to be an equal competition against these players coming in, the professional tape ball players coming in from Pakistan. I totally agree with you here, Asim. You raised this point, and we are very thankful to Friends India team who have participated. We all know they don't play the tape ball cricket, but they participated in this big tournament, and we really appreciate them from the management side. This is Superfix Champions Trophy, where we needed the teams to come up and promote the tape ball cricket. This is a fantastic contest going on here. Now we have 29 balls to go, and 83 runs is the requirement. Here is Murshad Sajjad. This has been launched, and launched big. It is big enough here to go to the stands. What a hit coming through from the bat of Bunty Patel. शानदार कमाल का शॉट ये बंटी पटेल के बल्ले से. Bunty Patel, the man with the plan here for Team Friends India, and definitely crowd loved this shot. Now, I must say Sajjad here will be thinking what to bowl next.
Down the leg side and well kept there by Mani Tendulkar. Extra runs here coming in for... and now, the one good thing about these Indian batters is the fact that, I am not just defending them, but the good fact coming through for these Indian players is they play a lot with these finger spin coming in the hard tennis ball. So the change of pace will not do much damage for them. It's only the pace that will do damage to them. Definitely, definitely. But if you have seen most of the local stars and the bowlers from Pakistan, they're trying very less variation. This was a good Yorker line ball and equally well played by Banji Patel. Coming back to the point, Pakistani stars playing here and the local stars, they are putting a lot of energy. They want to bowl fast. This is what Pakistan is known for, yeah, bowling fast. They're not trying that much fingers, I guess. Well, there was a couple of variety that we saw coming in this particular team itself. Saqib and Hassan Lefty. They have made that impact and shown what finger spin can do to you. It offers a lot of saving opportunities for the bowling side, a lot of options, and that is what has worked really, really nicely there for team Adam King Bhutta. But against this promising Indian side, I'm not sure how effective that's going to be. Actually, what I want to say here, this tournament is a mix of all the talents here. Now, once again, we'll come back to this point. Sajjad with a very good pace delivery, and Mushair was having no clue where to play it. Coming back to your point, where the variation is successful, we have seen this in the first 3 matches yesterday, where the first match, Friends India put the other team in a big problem by doing the variations. 3 wickets were down for nothing. Well, absolutely. That is, again, coming back to the same point, right? It makes things difficult for players who are used to playing pace, but suddenly pace taken off from the ball, they have no answers coming through. And this is a brilliant delivery coming in right in the block hole there from Sajjad Murshid. He's been very impressive. Last night he played the match here. He was fantastically bowling well there. He conceded a 5 wides in a T10 game and still managed to end his 2-over spell by conceding just 12 runs and picking up 2 wickets. This is fantastic. What I have seen here, I think Banti Patel is trying to put some more efforts and he's not playing his regular game. And this is what, look, at every ball he's regretting that he cannot make a good shot. This will, harm his confidence. What do you think on that? Well, absolutely. They need a big over here coming through. And it has to come in no time. It has to be the next over immediately, which will get them runs. And not sure whether it's going to be bowled by the finger spinner or whether it will be pace coming through. They're struggling against pace. In my opinion, the captain should opt for a pace bowler here. And they have the options of pace, but let me remind you, there is a very young guy, Saqib Malik. He bowled a fantastic over in yesterday's game. I hope you remember that. They have the spin options also with Adam King Bhutta. Now, let me tell you one thing. If he bowls that to these batters, if Banti Patel is striking there, if Krishna Sakpute is there, they're going to reverse sweep him towards the backward point for a boundary or a 6. Take my word for it. I totally agree with you on this because he was creating problems for the batsmen who are traveling here from Pakistan, and the spin was a really big problem for them. But I guess what you're saying, I will agree with you, the Indian batsmen can play spin better than Pakistani tape ball, but in the leather ball, this is not the case. Well, absolutely. I mean, that's a different ball game altogether. The argument, is rested when apparently when you're comparing the different ball game altogether. Then it's all about technique. It's all about, well, here technique is not required. Just see the ball, hit the ball out of the park. Banti Patel has arrived in Sharjah Cricket Stadium. What a shot over the long on. Captain Nabil Zafar was just watching it and it went for a 6. Umar Lala Jatt is actually a good all-rounder, a UAE local star. But I think he is underestimating here Banti Patel, who's in a peak form. He should be more careful against him. Now, beat any batter. That sort of a ball is meant to be dispatched. It's an over-pitch delivery. That should be called as a wide. It is called as a wide. And Banti Patel just missing out on the opportunity there. Have a lot of spectators out there witnessing the games. And Friends India would be hoping that they find a big over here somehow
to bounce back in the contest. It's still even Steven. Yes, while Bunty Patel is on crease, the match is evenly ball. Okay, Umar Lala Jad once again with a short ball. Bunty has tried, the fielder is trying to come under the ball, and the fielder was almost there. Bunty cannot manage to hold it. Almost is not enough, my friend. You need to hold on to it. I'm being a bit harsh, but looking into the sun and catching these catches, it's going to be tough, but you need to hold on to them if you're talking about Bunty Patel. Ghufranullah Khan, he tried his best. You can see Ghufranullah Khan a little bit like me, an overweight player. He tried his best, but you know, this is cricket. Umar Lala Jat once again. A short ball. Mushayir, I think he's struggling with his form. I have not seen any convincing shot from him as of now. Well, Mushair is struggling. Definitely he is struggling. And these are the coverages, yeah. People watching in the stadium. And this is, we're talking about this 4 o'clock, not even 4 o'clock in the afternoon. And the ground is expected to be full as the evening passes by. So on the other side of the ground as well. Excellent hit. Bunty Patel, you beauty. It's gone straight over the side screen for a 6. Serious hammering here by Bunty Patel. Umar Jat is, I think, totally confused. He don't know what to bowl Bunty Patel, and fantastic hitting by. All credit goes to this fantastic batsman from Friends India team. Excellent shot. Excellent pick up there from Bunty Patel. It was a low full toss and it was dispatched. And look at that, Bunty immediately asking for those gloves and making sure that he has enough friction between the grip and his hands. Because he's the man. If you stay on the crease, definitely there will be Friends India must be happy, and Adam King would have to revisit their strategy, how to handle this guy who's batting fantastically. He has faced 11 balls and he has already scored 26 runs. Bulk of the scoring is done by Bunty Patel. Short delivery, and that has been played in the gap. We'll have to wait for the signal there from the umpire. We'll recheck that one. Let's see if that was over his head. Short delivery. Pulled nicely there. Just falling inside? Yeah, it's a 4, it's a boundary. But I will tell you what form he's carrying. Bunty Patel is carrying a supreme form, and he has played this ball very, very nicely. The ball went for a 4, and Umar Jat is, I think, very, very expensive here. He is under pressure. He is definitely under pressure. Short delivery pulled in the air, and that's gone out of the playing area. Oh, Bunty Patel, you have hurt Umar Jat. What an expensive over. 3 overs 46. And mind you, Adam King Bhutta were 3 overs 45. Asim, you were wishing for a big over, and this is the over. I think you are here very, very right that if Friends India get a big over here, they're into the game, and now 18 balls, 48 runs. I think this is very much achievable. It should be achievable. 18 balls, they've managed to score 46. 18 balls, another 48 to get. I won't say they are favorable to win, but it is only this man on your screen, number 15, Bunty Patel. If he stays, bats right till the last ball, game is on. Okay, ladies and gentlemen, this is Super Big Champions Trophy live from Sharjah Cricket Stadium. I will be coming with you live after some time. Right now, we are joined by Muhammad Nadeem in the comm box. He will take care of the rest of the proceeding with the Asim Sheikh. Thank you very much, everyone. Last request to all the viewers, please do come and join us here at Sharjah Cricket Stadium, where fantastic cricket is waiting for you. Thank you very much. Thank you, Ashik. What a match we are having over here. One of my favorite, and much to be my favorite, Bunty Patel is in the middle, and I'm very excited, and my fellow commentators Asim as well. Now it is time for the little magician Saqib.
So 3 overs from pace bowlers, 2 went in favor of Adam King Bhutta, 1 over from Umar Jatt. He was taken downtown for runs. Now I won't be surprised if he reverse sweeps him. Shot is on. And who can play better? One of these two players, definitely. They are from India, and Indian somebody who has mastered in their shot. I think it took an edge, but lucky for the batter, it fell where there was no slip in place. Bunty Patel took off immediately as the keeper fumbled. This is excellent stuff. Brilliant stuff here from Saqib. Let me tell you, Asim. But his... More ball, and after that, you will see a switch. Possibly, pretty much possible. I won't be surprised if Bunty goes in, switches and goes for a reverse slap. But Saqib was being pointed rightly out earlier by Taimur Mirza that bowling action is something that is bothering him. Now, Asim, I feel my sixth sense is telling something that now something different is going to happen on the next delivery. Pretty much possible. Pretty much possible. He can just switch his position and paddle it on the offside. Let's wait and watch. Here comes Saqib. He has pulled him. No switch it required. It is gone. Oh, the cow's corner for a 6. Well, short delivery, and that really didn't make any difference. He didn't get that turn, but what a shot again coming up from Bunty. Bunty is definitely one of the superstars emerged in this tournament. We are seeing him first time. Yesterday we have seen him, and today as well. He is definitely a superstar. Oh, Bunty Patel. Can you be the hero for Friends India? Can you pull this off? 41 to get a 15 deliveries. Well, he slipped. He is in agony there. Had he stood there, had he made his just stood his ground, he would have whacked it out of the park. It was a full toss. Opportunity was definitely there, but he missed it. He was not happy with himself. Look at those 7 balls which Mushahir has faced. That's going to hurt them. Exactly. Oh, nice delivery. And I think he played it cleverly because I tell you, if Bunty stays till the end, anything can happen. It was a quicker delivery. Very smart move coming in from Saqib. He was getting too predictable, so that's the reason he changed his pace. Here comes Saqib for the last ball of the over. And he has smoked him out of the park. It is going, and it's on the road of Sharjah. Big hit from Bunty Patel. 4 overs gone. Look at that. Nadeem, I think you missed that. I missed it, but I have seen the action replay, and what a shot! Massive, huge hit out of the stadium. Well, talking about Bunty Patel, I don't know. As per my little experience, Asim, he is in that league where TM Brand, Chota Vicky, Fadmiya Chanu stands. He is not lesser than those great players of the tape ball. Now, this is a tape ball which he doesn't play regularly with. And see him with the hard tennis ball. He's a different level. And another great thing is that he's an all-rounder. I mean, he's very clever fast bowler. Me, as myself, I used to be a fast bowler, and I used to love bowling those cutters, swings. And Bunty Patel does that very well when he bowls. At the same time, look at that power hitting. Excellent stuff there. Brilliantly picked up. One of the finest shots there played by and Rashid Saklain will be bowling. Look at that. Big hit from Bunty Patel.
It landed on the roof. And that reaction of his said it all, that how frustrated he was while he missed those 2 balls in that over. 48 for Bunty Patel in 18 deliveries. Out of 59, 48 belongs to Bunty. Yes, and now Rashid, you know Rashid very well. He will be a bowler and 35 needed on 12 deliveries. Let me tell you, if they are able to hit 3 sixes, around 18, 20 runs in this over, I'll tell you that next over, the bowler will be under a lot of pressure. Absolutely. I mean, regardless of how many runs are left in the last over, unless it's more than 20, bowler is always in the pressure in this form of the game. Absolutely. Fast ball, hammered, helicopter in the air and catch is taken. Mushair struggled today and I think this struggle is finished. Well, what this will do, this will not have Bunty Patel come back on strike, even though they have crossed, because it's as per the new rules. And it is going to be Krishna Satpute. And he's regarded as the Tendulkar of tennis ball cricket in India. Definitely, if he is the Tendulkar of tennis ball cricket in India, then friends, India should not be worried because we know Sachin what he is capable of. Krishna Satpute just did not look in the right frame of mind, but he's a man of big matches. Trust me. Yes, league stages weren't, the first day wasn't meant for him, but you don't know what fortunes have been written for the day too for this man from Pune. Krishna Satpute. Definitely, Krishna is a very humble person. Awesome. Let me tell you that when Superflex Championship Trophy management has contacted him and they invited him that okay, they want his team to be playing in this tournament here in UAE, he was very humble and he accepted that. As you know that it's not easy because tap ball cricket is not that famous. In fact, it's very rare being played in India. But they took a chance and they came over here and they are doing great. And hats off to this man, Krishna, who has accepted this challenge. Well, absolutely. You need courage. I mean, you've seen Tendulkar play 2020 as well. It's not his game. Sachin is not made for T20 cricket, but he still played the IPL because of that. And then when he realized that that's not his ball game, he opted not to be a part of the national T20 side. Very smart move, very selfless move, leaving it for the juniors to play that T20 format. That's what Sachin did. That's a great. I mean, when talking about Sachin, I tell you that I'm watching Sachin since he played the first match back in 1980s. Krishna, Bunty, helicopter shot, straight to the fielder. Well, this over is going well so far. This is excellent cricket from Bunty Patel and Krishna Satpute. This is what coordination is all about. They ran after the throw was released from the bowler's, from the fielder's hand. After pitching, they ran for the second. They literally pulled this single out of the jaws of the fielders and wicketkeeper. And it's very important that Bunty should be passing the deliveries because they need 32 on 9 deliveries. They need minimum 2 sixes in next 3 deliveries. Absolutely. 4.3, 62 for 1. Helicopter launched and helicopter landed safely. Just a single. In fact, that's a no ball. Wow, look at that drama. It's still not over. Bringing in that adrenaline rush with every extra that has been bowled. It's drama happening in Sharjah Cricket Stadium. It's drama happening in Superflex Championship Trophy. Well, cricket at its best. They needed 32 runs on 9 deliveries and Rashid has bowled a no ball. Now 30 needed on 9 deliveries. Krishna literally has got a brilliant chance. They need a couple of sixes as I have been mentioning in his 3 deliveries. Let's find out. He has hit a big one and that's big enough.
Wow, what a hit from Krishna Satpute. Bunty Patel and Krishna Satpute, number 1 and number 15, putting a show here in Sharjah Cricket Stadium. What a hit. And when Krishna hits them, it stays hit. What a brilliant shot, and captain is joining the party along with Bunty. Little while ago, Asim mentioned that Krishna is known as a Tendulkar of the tape ball cricket. In fact, hard tennis ball, and this time he has joined Bunty and hit the blow when it was much needed. 24 needed on 8 deliveries. Match is on. Match on, definitely on. 1-6 here. And it's going to be a crazy finish to this game. 24 required of 8 deliveries, 70 for 1. Friends India. Very important 2 deliveries are coming up. As Asim you mentioned that if there is 20 or less than 20 runs, the bowler will be under huge pressure. Let's wait and see. Rashid steaming in. That has been played towards wide of long on. And just a ball to go in this over. 23 to get of 7. Can he hit a 6? They need 6. They definitely need 6 in this delivery, because if they need 6, it will be only 17, which means just 3 sixes. And I'm really feeling very pity for that bowler who is going to bowl the last over, and if he is up against Bunty. Well, regardless who he is against, because Krishna has shown signs of unleashing. He has hit one straight over the side screen for a big 6. Here comes Rashid Saklain. This is the most precious delivery of this game. 23 of 7. And it is Bunty Patel on strike. He has got to his 50. Chance and taken. Bunty departs. Rashid strikes of a low full toss, and Bunty is agitated that he's not able to take that over the ropes. Oh, is that the end of hopes here for Friends India? Well, definitely a big blow for Friends India. Low full toss. He didn't get the elevation. Shot was on. He tried his best, but it went straight. A low missile directly in the hand of the fielder over there. Look at that. Well, it was hit flat. He did not get elevation there. And Sunny Shah making no mistakes. And what a big blow. Big blow here coming in for Friends India. Bunty Patel departs. And Rashid Saklain is the man who started the over with the wicket, ended the over with the wicket. Well, Friends India after this, they will be playing with Pak MWI. And they have to win this game if they want to stay in the competition, because next match is also going to be very tough. They need a couple of points. This is jab ball cricket. Anything can happen in this, but the man they depended a lot. Bunty is walking back, but he has played his part, Asim. He is a hero for me. He has already done his best. At times it's a cricket, but I think that he has definitely made a match for Friends India. Now is the Superman of big tennis ball cricket. Krishna is on strike. As Asim described him that he is known as the Tendulkar of tennis ball in India. We want to see. Well, I love that commentary when Sachin, first time in the history of level ball cricket, international cricket, when Sachin scored 200 runs, Shastri said, "A Superman from India." The first man on the planet to score a double century, and it's the Superman from India. Spot on, Asim. Spot on. Nice memory. Now then, left arm bowler Hassan will be bowling to Krishna. Getting a thick outside edge, ball's racing away towards the boundary, and looks like it has enough legs, and it will be a boundary of the first ball. What a start to the over. Very good start. Very good start. 20 needed in 5 deliveries. Well, Asim, if he hits next ball out of the park, then
Well, I'm waiting for that switch hit. I'm waiting for that switch hit to come through. It's gonna pay off here. Definitely gonna pay off. Is he gonna unleash? And look at that. They are taking an objection on the action of the bowler there. They are talking to the umpire about the bowler's action. I don't think so. It will be working in their favor because he has already bowled in all the matches 1-1 over, and he's continued to bowling. Well, I like to see this. I like the spirit of the French Indian team. They have been really very sportive. They have shown a lot of sportsman spirit. And as you have mentioned, Asim, earlier on, the Pakistani batter, they always check the ball. Whereas since they are not used to it, they're really not checking. I hardly see any of the batters checking the ball. Let's wait and see what Krishna will do here. And that's going to be a bye. Krishna not able to connect that. And that will bring the other Krishna on strike. This- We are yet to see the switch hit. I think if he is able to connect, if he plays one switch hit and if he connected that, then after that it will become very interesting and will put a lot of confusion in the mind of Hassan. Well, calculation is very simple. 4 balls, 3 sixes. Very simple calculation. Either 4 ball, 3 sixes, 4 ball, 2 sixes, a boundary and a couple. Is just about this delivery now. Hassan lefty. That has been pulled and that's gone all the way for a 6. They needed that desperately. Oh, can the game get more entertaining than that? Oh, Nadeem. What a shot under pressure. Little shot, went back, waited for it and hit it over long on for a very important 6 of the match. 12 needed on 3. Swing and a miss and a wide. Wide given there by the umpire. And in the protest, Hassan lefty sits down on the carpet. Well, you got to see. I think it's a fair call, Asim. It's a fair call because after the turn, ball went further away and that white line which is indicated for the umpire, it was clearly outside from there. Well, in my opinion, you know, it's not because friends India is playing, but overall, Hassan lefty, he has bowled brilliantly, but he has that slight advantage of that bending of the arm, which, in my opinion, there has to be some law that can stop such bowlers from bowling in the game. I think that will come into play. Definitely that will come into play. Maybe after this match or maybe after this tournament. It needs to be checked. Meanwhile, 11 he did. And this time he hits it in the air. I don't think it's going to go out of the ground. And the catch is taken. Oh, what a blow here. He was looking dangerous. He gave them the hope that he might pull this off. Oh, God. Just not able to get enough distance. Got the elevation. Ball swiveling in the air. And Krishna departs. What a blow here. 2 balls, 2 sixes. Simple calculation here. Very simple. I think couple of meters short. He hit it miles in the air. Who can be the hero here? Will it be Hassan lefty? High probability. Or will it be the new man walking in? Subshid is the new man who has come in. Can he do it? Can he do it? But Asim, I would prefer if Friends India got a left-hander batter, they should send that guy up. I don't think so. Yes, Subshid is the right-hander batter. I don't think they have a left-hander player in their team. I doubt. If they had, that would have been the biggest advantage that they would have had, because tackling Hassan lefty would have been relatively more easier. Two balls, 2 sixes, no other calculation apart from that. It can still be a super over if he gets a boundary and a 6. It can be a super
It has been played on the onside, and that will be the game here for Adam Bhutta King. That over from Saqib turned it around, in my opinion. Those dot balls that were played in that over. Oh, my friend Nadeem, what a game of cricket. What a game of cricket. It swung, the pendulum kept swinging. And as we said, it has not been easy to chase runs here in this venue, in this tournament. Full credit goes to friends in getting. They are not somebody who is utilized, who used to play with the tail ball, but how tough time they are giving to all these players. Now the last ball, 10 runs required. Krishna, the captain on strike, and he misses it. And umpire has not given wide, rightly so, because the Krishna was moving in the crease. So finally, Adam Bhutta King have won this game by 10 runs. But let me tell you that Friends India have won the hearts again. They have shown brilliant performance with the ball and with the bat. All they lacked was a left-handed batter.